हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम इन मैथ विद एकेडमी। तो आज आपका 14 जनवरी है और दैट इज द डे ऑफ मकर संक्रांति। तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी लोग को शुभकामनाएं। और इसको खिचड़ी भी बोलते हैं। दिस इज द डे वी ईट खिचड़ी इन द मॉर्निंग। ओके, सो आज हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे वो बेस्ड होगी मॉडुलस फंक्शन के ऊपर, है ना, कि मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड हम कैसे सेट को लिखते हैं और उनके जो पॉइंट्स होते हैं, जो रीजन हमारे पास होगा उस रीजन के हम इंटीरियर पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स की हम बात करेंगे। एंड उसके बाद हम उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि सेट हमारे पास किस प्रकार का है। ओके, तो ये सारी जो अभी तक के हम लेक्चर्स में करते चले आए हैं, तो 4 लेक्चर्स में जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है उनको और अभी हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे दैट भी क्रिस्टल क्लियर और कॉन्सेप्ट, है ना, हमारी जो डेफिनेशंस हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो आई एम शेयरिंग स्क्रीन टू यू। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्या हमें पूछा गया है। तो फाइंड द इंटीरियर ड्राइव स्टेट closure and the set of isolated points for the following sets based on the modulus function, and tell which of the following sets are open, closed, bounded, compact, dense, path connected, connected, convex, perfect and discrete। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करना है सेट के बारे में। तो आइए वन बाय वन हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इनके इंटीजर्स को देख पाते हैं, इनके हम लिमिट पॉइंट्स को देख पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट प्रॉब्लम। तो लास्ट क्लास में हमने 40 प्रॉब्लम्स कर लिया था जो कि बेस्ड ऑन द सबसेट ऑफ R2। ओके, तो आइए 41 जो प्रॉब्लम है उसको करते हैं। तो लेट्स राइट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो हमें लिखना है दैट इज इंटीरियर पॉइंट। तो सबसे पहले तो हमें सेट को इसका जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है सेट को कैसे हम R2 प्लेन, ये यू नो दैट दिस इज योर R2 प्लेन। तो R2 प्लेन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लेट अस सी। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। इट मींस मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। इट मीन दैट दिस इज x इज लाइज बिटवीन 1 एंड माइनस। एक तो ये रीजन हो गया। तो हम x इज इक्वल टू 1 का हमने यहाँ पर लाइन कीजिए ग्रीन कलर में। दिस इज लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 की हमने लाइन की थी दैट। एंड इन दो जो लाइंस हैं इनके बीच का, यू नो दैट x इक्वल टू 1 द लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस एंड x इक्वल टू -1 आल्सो विल बी द लाइन विच विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो इनके बीच का रीजन हमें लेना है, ये वाला रीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक। Here we can just have mod of 2 is less than 2, and this implies this is y is less than 2 and greater than -2. So here we just draw this is y is equals to 2 line और this is y is equals to -2 और इसके बीच का रीजन लेना है, ठीक। तो इन दोनों रीजन में जो कॉमन रीजन है वो हमारे पास ये वाला रीजन हमारे पास कॉमन है। दिस वन इज हम जो यहाँ पर सैडेड रीजन यहाँ पर हमने दिखाया है, दिस इज अ कॉमन पोर्शन फॉर फॉर आवर सेट, ठीक। तो इस कॉमन रीजन बिटवीन दिस लाइंस, है ना, तो चाहे वाई एक्सिस वाली लाइन हो चाहे एक्स एक्सिस वाली लाइन हो, इनके बीच का जो रीजन है दैट इज योर सेट, है ना, जिसमें इस रीजन के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास सेट के मेंबर्स हैं। ओके, and clearly we have this is x is less than strictly less than 1 and greater than -1, and y is strictly less than 2 and greater than -2. It means that we are not taking the boundary point, we are not taking the points on the lines. Okay, so let us start to writing the thing. So first, interior point. We know that a point is said to be interior if we can able to draw open disk and that open disk contained totally in the set. So because we are not including the boundary points, so all the points will be the interior point. So all the points within the set will be the interior point. So if we are writing a interior, so it will be what? A interior, it will be what? It will be again this set mod of x is less than 1 and this is mod of y
ये सारे सेट के जो मेंबर्स हैं दैट विल बी द इंटीरियर पॉइंट. दिस इंप्लाइज ए इंटीरियर इज द ए इटसेल्फ, है ना. सारे के सारे पॉइंट सेट के इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे. नेक्स्ट ड्राइव सेट. तो ड्राइव सेट के अंदर हमारे पास जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो भी लिमिट पॉइंट्स बन जाते हैं. तो वी कैन जस्ट राइटिंग ए डैश इज जस्ट इक्वल टू x comma y, so that mod of x is less or equal to 1 and this is mod of y is less or equal to 2. Okay, so this is your drive set. Next we talk about the closure, है ना. हमें closure निकालना है. तो we know that कि closure कैसे defined होता है. A closure is just equal to A union of A dash, and that will be, you know that कि this A dash is superset for A, so it means A union A union A dash will be equal to A dash. Okay, drive set ही आ जाएगा. Next है isolated point. So here no point in the set which is not limit point. So it means this will be A minus A dash, है ना. This will be A minus A dash. Okay, so it will be your empty because there is no point which will be the isolated point. Okay. So next, let us see about the open, closed, bounded, compact, dense, sparse, connected. इन सारी properties को देखते हैं हम लोग. So since every point of the set is an interior point, yeah, in other words you can say if a set is the neighborhood for each of every point of itself, then it is called the open set. So here A interior is just equal to A itself. This implies it is an open set. It is open set, है ना. Next we can just say it is open but it is not closed because since you can that A dash is not a subset of A, this implies not closed. But it is bounded. ठीक है. Since this is x is I am taking less than 1 and greater than minus 1, and this is y I am just taking less than 2 and greater than minus 2. So this implies bounded set. It is bounded set. Okay. So bounded set, but it is not closed. So since it is not closed, so this implies not compact. Is not compact. ठीक. कॉम्पैक्ट के बाद क्या देखना है. डेंस. डेंस सबसेट क्या होता है जब उसका जो क्लोजर है दैट इज होल आर टू प्लेन, बट हियर इट इज नॉट. सो since you can just say a closure which is not equal to whole r to plane, it means not dense. तो ये सेट हमारे पास डेंस नहीं है. Next we have no check about the connectedness and path connected. So clearly we can join any 2 points within the set by a curve. So it is path connected. It is path connected as well as connected and also convex. ठीक है. So you can see clearly by the figure geometry. Path connected, it is path connected. और ये अगर path connected है तो this implies connected and also it is convex because if we can join any 2 points within the curve by a straight line, and that straight line will be belongs to the set. Okay, so also convex. Since this A dash is not equals to A, so this implies not perfect. And since isolated points का जो set है which is also not equals to A, this implies not discrete. तो इसका मतलब सेट हमारा डिस्क्रीट नहीं है. तो सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली कि हमारा सेट कैसा है. तो इट इज ओपन सेट. ओके, दिस इज ओपन सेट and it is bounded. It is a bounded set, not closed or not compact. Not closed, it's not compact. Okay, it is not compact. Okay, it is not dense, it is not discrete, not perfect,
It is path connected, connected, and also convex. Okay, let's see another set. तो ये हमारे पास सेट, इसमें क्या करा है कि इसमें x इज लेस देन वन, मतलब हम जो एक्स एक्सेस है, तो यहाँ पर देखा है कि हमने जो वाई एक्सेस की जो बाउंड्री है, जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ वाई, उसको हमने रेड से डिनोट करा है, तो इसने हमने रेड से इसे जो है सैडेड रीजन बना दिया। अब सैडेड रीजन रेड से बना दिया, इट मींस जो रेड लाइंस हैं वो इंक्लूडेड है इसमें रीजन के अंदर, वेयर मॉड ऑफ वाई इज लेस और इक्वल टू टू। इसका मतलब ये लाइन, ऊपर वाली लाइन भी हमारे पास रीजन सेट में है, और नीचे वाली लाइन, लाइन का मतलब इस रीजन में, बाउंड्री रीजन में, ठीक है। सो हियर लेट अस राइट द आंसर। तो फर्स्ट वी कैन जस्ट राइट ए इंटीरियर। तो ए इंटीरियर हमारे पास वी नो दैट की बाउंड्री नहीं होगा, तो यहाँ पर अपर एंड लोअर बाउंड्री है इस रीजन की। तो दिस इज मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन वन, एंड हेयर मॉड ऑफ वाई विल लेस देन टू। ओके, जब हम ये डैश लिखेंगे, मतलब मीन्स ड्राइव सेट लिमिट पॉइंट, तो लिमिट पॉइंट्स में हमारे पास जो वाई अपर एंड लोअर बाउंड्री हो तो है, बट लेफ्ट एंड राइट दोनों बाउंड्रीज भी आ जाएंगी। तो इट मीन्स दिस इज मॉड ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू वन, ये भी आ जाएगा, एंड mod of y less or equal to 2, तो था ही सेट के अंदर। here the some extra points and also the limit point। तो next we can just say कि a closure क्या हो जाएगा, this is a closure is a union of a dash and it will be equal to a dash because a dash is superset for a isolated point, there is no point which is the isolated point, so it will empty set। Since a interior is not equals to a, so this implies not open। Since A dash is not a subset of A, this implies not closed। तो ये सेट ना ही closed है ना ही open है, but it is bounded। bounded है, it is bounded। Since not closed, this implies not compact। Okay, it is not compact। and next तुम्हारे पास compact के बाद हमें dense देखना होता है, तो since this A closure is not equals to whole plane R2, this implies not dense। it is not dense। Okay, uh, it is path connected, it is path connected, path connected, this implies connected, and also convex। क्योंकि अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन विद इन द स्ट्रेट की होगी। इट इज कॉन्वेक्स। और देन व्हाट वी हैव टू डू, कॉन्वेक्स के बाद हमें देखना होता है परफेक्ट, या क्या क्या हम प्रॉपर्टी करना है। Okay, connected, this is open, closed, bounded, compact, dense, path connected, connected, convex, perfect and discrete। दो properties और देखनी है, perfect and discrete। तो since this is A dash is not equals to B, this implies not perfect। and since isolated points का जो set है, this is not equals to A, this implies not discrete। तो discrete भी नहीं है और ना ही perfect है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कौन सा रीजन लिया गया है, इसमें लिया गया है कि mod of x इज लेस देन वन एंड mod of y इज ग्रेटर देन टू। ओके, तो वी कैन क्लियरली हैव शोन फिगर, हमने इसको फिगर में देखो ज्योमेट्री दिखाई है कि हियर दिस इज y इज ग्रेटर देन टू, और दिस y इज लेसर देन माइनस। ओके, तो यहाँ पर इस रेड लाइन के ऊपर का रीजन y की अगर बात करें, और रेड लाइन के नीचे का रीजन, बट द मॉड ऑफ x इज लेस देन वन, इट विल बी बिटवीन द ग्रीन लाइन, है ना। तो ये वाला जो है रीजन, ये वाला रीजन हमारे पास कॉमन हो गया, और ये वाला रीजन हमारे पास कॉमन हो गया। तो इन रीजन को में हमें पास लिखना है। तो इट इज अनबाउंडेड रीजन क्लियरली बिकॉज इट विल बी गोइंग टू प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। तो वी हैव यहाँ पर जो x एक्सिस है, x तो बाउंडेड है बट y अनबाउंडेड है, y विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पर यू कैन जस्ट से इंटीरियर पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे बिकॉज बाउंड्री यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम जब बात करेंगे ड्राइव सेट की, तो ड्राइव सेट के अंदर बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पर दिस मॉड ऑफ we can just say mod of x is less or equal to 1 and this is mod of y is greater or equal to 2। ठीक, and next we can just see कि जो a closure है that will be equal to it is, and फिर isolated points का जो सेट है that is empty। okay, so
अब देखिए, अब इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो यहाँ पर since this is A interior just equal to A, this implies open set. Since A dash is not a subset of A, this implies not closed, not bounded, bounded भी नहीं है. This implies not compact. This is not compact. Okay. Next, not compact. Next, we can just say since A closure is not equals to R2, this implies not dense, not dense. It is not path but connected, not path connected, not connected, connected भी नहीं है. Not convex and not convex. Separated region है ना, convex, and since this is A dash is not equals to A, this implies not perfect, and since this is iso of A is not equals to A, so this implies not discrete. इसका मतलब discrete भी नहीं. Okay, so दिस इज ओपन सेट है ना, जिसकी प्रॉपर्टी है ओपन, बाकी और भी कोई चीज नहीं है इसके अंदर. ओके, नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं. तो इस सेट में हमने क्या करा है कि अभी हमने जो अ, हमारे पास बाउंड्री है, दैट वाई वाली जो बाउंड्री है, मतलब रेड जो लाइन है, उसे इंक्लूड करा है इस रीजन में. तो लेट अस सी कि हमारे पास अब क्या हमारे पास स्टेप्स आएंगे. तो इंटीरियर में तो हमारे पास बाउंड्री नहीं आती, तो वी कैन जस्ट से कि इंटीरियर में हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे, वेयर mod ऑफ x इज लेस देन 1 एंड दिस इज mod ऑफ y इज ग्रेटर देन. ओके, जब हम ड्राइव सेट लिखेंगे, मतलब लिमिट पॉइंट, तो लिमिट पॉइंट में हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स आ जाते हैं. तो बाउंड्री पॉइंट्स अगर आ जाते हैं तो अब कैसे लिखना होगा, दिस इज a डैश इज जस्ट इक्वल टू पॉइंट्स on x-axis which is less or equal to 1 and mod of y is greater or equal to 2. तो क्लोजर को जब लिखेंगे तो क्लोजर तो हमारे पास ई डैश ही हो जाएगा, है ना. फिर हम आइसोलेटेड पॉइंट्स को लिखेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट इज दैट बिटवीन द सेट. एंड नेक्स्ट वी कैन जस्ट से since this implies not open, or since a dash is not a subset of A, so this implies not closed. ये हमारे पास क्लोज भी नहीं है. क्लियर. ओके, नेक्स्ट और आल्सो नॉट बाउंडेड, आल्सो यू कैन से आल्सो नॉट बाउंडेड. so this implies not compact. Since A closure is not equal to whole plane R2, this implies not dense. Okay, not path connected. Clearly we will say clearly not path connected, not connected, not connected. Okay, next not convex. Since A dash is not equals to A, this implies not perfect. Okay, it's not perfect. And since isolated point of A is not equals to A, this implies not discrete. तो ये छोटी छोटी रिजल्ट्स या डिफरेंसेस आपको ध्यान होनी चाहिए, और फटाफट आप आंसर्स को लिख दोगे. ओके, तो इट इज नॉट डिस्क्रीट. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. तो यहाँ पर जो रीजन लिया गया है, दिस mod of x इज लेसर इक्वल टू 1 एंड mod of y इज लेस देन 2. इट मीन यहाँ पर जो ग्रीन लाइंस हैं उनको रीजन में इंक्लूड कर, उनकी बाउंड्री को इंक्लूड करा गया है, और जो रेड वाली लाइंस है, या y इक्वल टू कर सकते हो, y इक्वल टू 2 एंड दिस इज y इक्वल टू -2, एंड यहाँ पर हमारे पास x बराबर 1 था, और दिस इज x इक्वल टू -1. तो x इक्वल टू -1 इक्वल टू 1 का जो बाउंड्री है उसे इंक्लूड करा गया है, बट मतलब जो y वाले से नहीं, तो जो ग्रीन वाला रीजन है दैट इज योर सेट. तो आइए फटाफट लिखते हैं. तो ए इंटीरियर हमारे पास क्या हो जाएगा, बाउंड्री हम हटा दे रहे हैं, x कमा y such that mod of x is less than 1 and mod of y is less than 2. ओके, नेक्स्ट वी कैन जस्ट से a डैश, तो a डैश में बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाएगी. तो यहाँ पर हम और जो y वाली में बाउंड्री थी वो नहीं ले रहे थे मॉड्यूलस में, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे. तो लेसर इक्वल टू 1 एंड mod of y is लेसर इक्वल टू 2. नंबर थर्ड, a closure just equal to a dash.
and this is isolated points is what? This is equals to empty set. Okay, since this A interior is not equals to A, this implies not open, तो open नहीं है। फिर हमारे पास आते हैं क्लोज की बात करते हैं, तो क्योंकि हमारे पास जो ड्राइव सेट है, since this drive set is not a subset of A, this implies not closed, और clearly it is bounded, है ना? तो clearly you can say clearly it is bounded. Since this is not closed, so this implies not compact, है ना? इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट नहीं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट निकाल लिया, फिर हमने क्या देखना था, डेंस। तो since this is a closure which is not equal to whole plane R2, so this implies not dense. Okay, dense नहीं है, but it is path connected, and this implies connected, and also convex। ठीक है, तो कॉन्वेक्स हो गया। फिर हम देखते हैं परफेक्ट की बात करते हैं, तो इट इज नॉट परफेक्ट, सिंस A dash is not equal to A, this implies not perfect। Now since this is iso of A is not equal to A, this implies not distinct। कोई सेट के अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि लिमिट पॉइंट ना हो, है ना? सारे के मतलब सेट के मेंबर्स जो है, जितने भी पॉइंट्स है वो लिमिट पॉइंट्स हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है बाउंड्री पे। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हमने दोनों बाउंड्रीज ले ली है ना, अपर एंड लोअर बाउंड्री एंड लेफ्ट एंड राइट बाउंड्री, तो दोनों बाउंड्रीज हमने यहाँ पर इस सेट के अंदर इंक्लूड कर लिए। तो दिस इज ए एक्स कामा वाई सच दैट मॉड ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ वाई इज लेस और इक्वल टू 2। तो आइए ए इंटीरियर लिखेंगे, तो बाउंड्री हटा देना है, एक्स कामा वाई सच दैट मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 एंड दिस इज मॉड ऑफ वाई इज लेस देन 2, एंड देन यू कैन जस्ट राइट योर ए डैश। तो ए डैश यही आ जाएगा क्योंकि बाउंड्री पॉइंट भी हमारे पास लिमिट पॉइंट्स होते हैं। एंड नेक्स्ट एक क्लोजर इट विल बी इक्वल टू ए अगेन। आइसोलेटेड पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे दैट इज एम्प्टी, so since this is A interior is not equals to A, this implies not open, is not open। Okay, next हमारे पास बात करते हैं, since A dash is the subset of A on the side, so closed set is closed set, and bounded, it is also bounded, this implies compact। ये सेट हमारे पास कॉम्पैक्ट मिला, this is the compact set। okay, compact set। okay, बाउंडेड है तो और क्लोज भी है, इट मीन बाउंडेड प्लस क्लोज इट मीन गिव्स द कॉम्पैक्ट सेट। ओके, सिंस ए क्लोजर इज नॉट इक्वल्स टू R2, so this implies not dense। ठीक है, और क्लियरली इट इज अ पाथ कनेक्टेड, तो पाथ कनेक्टेड है, दिस implies कनेक्टेड है। ओके, एंड कॉन्वेक्स है, एंड कॉन्वेक्स थोड़ा इम्प्लाई पाथ कनेक्टेड होता है वो इम्प्लाई नहीं करता है कॉन्वेक्स, है ना? तो कनेक्टेड एंड आल्सो कॉन्वेक्स। ओके, कॉन्वेक्स हो गया, तो नेक्स्ट वी कैन जस्ट परफेक्ट देखना है, तो सिंस दिस इज ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज परफेक्ट सेट, इज परफेक्ट सेट, एंड दिस इज ए डैश इज इक्वल टू, सिंस iso of A is empty, it is not equals to A, this is not discrete। ठीक है, तो अभी तक जो सेट मिल रहा है वो डिस्क्रीट नहीं है, कोई परफेक्ट हो जा रहा है, कोई परफेक्ट नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास आएंगे डिस्क्रीट सेट भी हम देखेंगे। ओके, तो लेट्स राइट द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम 47। हियर वी कैन टेकिंग द अपर ऑफ द रेड एंड लोअर ऑफ द रेड, है ना, एंड बाउंडेड रीजन बिटवीन एक्स एंड वाई। So here if we just taking the interior, we can just not taking the boundary of y or x also, x is less than 1 and this is y greater than 2, ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट भी के अंदर ये जो साइडेड रीजन है दैट इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ द सेट। ओके, ए डैश के अंदर हमारे पास बाउंड्री आ जाएगी, तो वी हैव जस्ट टेकन mod of x is less or equal to 1 and mod of y is greater equal to 2। next we can just have
closure. So closure will be equal to A dash, and this is ISO will be equal to. So this since A interior is not equal to A, this implies not open. Okay? And since A dash, since A dash is A dash is not a subset of A, it implies not closed. ये सेट हमारे पास क्लोज्ड भी नहीं है, ना ही ये ओपन है, और नॉट बाउंडेड दिस implies not compact and not dense because it is not dense because A closure is not equal to R2 है ना, not path connected not connected भी नहीं है and not convex। और क्योंकि जो उसका ड्राइव सेट है नेट नॉट इक्वल्स टू ए, since this is A dash is not equals to A, it implies not perfect। तो ये परफेक्ट सेट भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है बात करेंगे since this is isolated of A is just equal to not equals to A, it implies not discrete, दिस इज नॉट डिस्क्रीट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो है सारे प्रॉपर्टीज हमने लिख ली। नेक्स्ट प्रॉब्लम 48 की बात करते हैं। आइए जरा, तो यहाँ पर बाउंड्रीज ले ली है रीजन की। तो आइए फटाफट आंसर लिखते हैं। अब तो आपको लिखना आ गया होगा कि हाउ वी आर आंसरिंग द क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंस को हम कैसे आंसर करें, कैसे हम आंसर्स को लिख रहे हैं फटाफट। क्योंकि हमको एक बार डिफिनीशन हमारे दिमाग में आ गई और कुछ रिजल्ट हमारे दिमाग में सेट हो गए, और हम इजीली वी कैन एबल टू राइट द इंटीरियर पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स, इट मीन ड्राइव सेट एंड क्लोजर, एंड फिर ओपन है, क्लोज्ड है, बाउंडेड है, ठीक है, कि अनबाउंडेड रीजन है, कैसा रीजन है, एवरीथिंग वी कैन एबल टू से। तो लेट्स राइट अबाउट द इंटीरियर पॉइंट। तो इजीली वी कैन जस्ट से इसका जो इंटीरियर होगा वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज योर एक्स कमा वाई such that this is mod of x is less than 1 and this is mod of y is greater than 2। This is the interior point because boundary point के अंदर से अगर हमें ड्राइव सेट लिखना है तो ये फिर से ये आ जाएगा क्योंकि सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट एज वेल एज इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पर जब हम क्लोजर की बात करेंगे तो ए क्लोजर विल बी ए अगेन बिकॉज ए एंड इट इज सेम, तो इट विल बी ए। फिर आइसोलेटेड पॉइंट की बात करेंगे तो वो इनपुट आ जाएगा बिकॉज कोई ऐसा पॉइंट नहीं है सेट के अंदर जो कि लिमिट पॉइंट ना हो, है ना। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं, वो पॉइंट जो कि लिमिट पॉइंट नहीं है, सेट के वो मेंबर जो कि लिमिट पॉइंट नहीं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, सिंस ए इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू सेट हमारे पास ग्रुप पे नहीं है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सारे के सारे ए इज क्लोज, इट इज क्लोज सेट। क्लोज हो गया एंड नॉट बाउंडेड बाउंडेड नहीं बिकॉज हियर वी विल चूज दिस वाई विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना। So this implies it's not compact. It is not compact. And since this is equal, this is not equal to voltage in R2, this implies not dense. And clearly it is not path connected. We can see क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने के लिए कोई भी हमारे पास पाथ नहीं, तो इट्स नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, है ना, नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड एंड नॉट कॉन्वेक्स, तो नहीं कॉन्वेक्स है। बट अगर इसका ड्राइव सेट जो है ए के इक्वली है, दिस इज अ परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट सेट बट नॉट डिस्क्रीट, ठीक है। सिंस दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट का सेट है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू ए, इट मींस नॉट डिस्क्रीट। ओके, so this is the answers about this step। नेक्स्ट आइए जरा देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो कि वाई एक्सेस की रेड लाइन से के बीच का रीजन, और साथ में राइट ऑफ दिस एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर जो ये व्हेन लिखा है मॉड ऑफ एक्स इज लेस ग्रेटर देन 1, इट मींस दैट एक्स इज टेकिंग ग्रेटर देन 1 एंड टेकिंग लेस देन -1। ओके, तो ये रीजन हमारे पास आ रहा है। तो लेट अस राइट द आंसर। ये हमारे पास जो सैटेड रीजन है दैट इज द सेट, है ना, सेट है वो तुम्हारे पास सारे के सारे पॉइंट्स हो जाएंगे इस रीजन में। mod of x is greater than 1 and mod of y is less than 2, it means it will be a again। और जब हम ए डैश लिखने जाएंगे तो बाउंड्री पॉइंट्स भी हमारे पास आंसर एंड दिस इज mod of y लेस और इक्वल टू
Next we can just have the closure. A closure will be equal to 8s, and next isolated points की अगर हम बात करेंगे 34 into t4. ओके, तो आपको जब सेट लिखा हो तो आपको रीजन देखना आना चाहिए कि कौन से रीजन की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं उस R2 प्लेट में जो कि हमारे सेट के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटीरियर है वो हमारे पास एक ही बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज एज ओपन सेट, इट इज ओपन सेट, it is open set. Since this is A dash have some extra points that then set, it means it is not a subset of A, so this implies not closed. We have a closed set. Yeah. Also not bounded, also not bounded, and this implies not compact. ठीक, compact नहीं है, and since this is A closure is not, it is भी नहीं है। ओके, और हमारे पास क्या चीजें हैं इसके अंदर, it is not dense and नॉट पाथ कनेक्टेड है ना, पाथ कनेक्टेड भी नहीं, नॉट पाथ कनेक्टेड क्लियरली हम देख पा रहे हैं फिगर से, नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, एंड एंड तुम्हारे पास नॉट कॉन्वेक्स एंड नॉट कॉन्वेक्स एज वेल, और क्योंकि a dash is not equals to a, it implies not perfect, perfect भी नहीं, not perfect, or since this is iso of A is not equals to A, it implies not discrete, है ना, discrete, ठीक। तो these are answers of this set, okay। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या लिया गया है, इसमें हमारे पास जो बाउंड्री है, जो अपर एंड लोअर बाउंड्री है रीजन की, उसे इंक्लूड कर लिया गया है, बट जो ग्रीन वाली लाइन है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब 1 एंड x इक्वल्स टू -1 को नहीं इंक्लूड करा गया है, बट x y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -2 को इंक्लूड कर लिया गया है। ओके, तो आइए जरा लिखते हैं सोल्यूशन। तो हमारे पास फर्स्ट जो आएगा इंटीरियर में जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, वी आर नॉट टेकिंग द बाउंड्री पॉइंट, इट मींस दिस इज mod of x is greater than 1 and mod of y is less than 2। ओके, नेक्स्ट ई डैश के अंदर तो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे, चाहे वो दोनों तरफ की बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं x comma y, such that mod of x is greater or equal to 1 and this mod of y is less or equal to 2। Next we can just have a closure, so a closure will be equal to a dash, and next isolated points, तो isolated points हमारे पास इम्पिटी होगा, I show a is इम्पिटी, तो since a interior is not equals to a, this implies not open, is not open, और ना ही ये क्लोज है, बिकॉज यहाँ पर एक तरफ की बाउंड्री तो ले रहे हैं बट दूसरी तरफ की बाउंड्री हम नहीं ले रहे, है ना। तो since it is a dash which is not a subset of a, this implies not true and not bounded, it is not bounded as well, so not bounded, this implies not bounded। Okay, so then a closure is not dense, not path connected, not path connected and not connected, because we will not able to find any curve to join from left region to the right region point, okay, and not convex, okay, convex भी नहीं है हमारे पास, और since a dash is not equals to a, it implies not perfect, perfect iso of a is not equals to a, this implies not discriminant, okay, it is not discriminant। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। हियर वी हैव जस्ट टेकन द राइट ऑफ द x इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 रीजन एंड इक्वल्स टू -1 के लेफ्ट का रीजन और x इक्वल्स टू 1 के राइट का रीजन, और यहाँ पर y इक्वल्स टू 2 के अपर का रीजन एंड y इक्वल्स टू -2 के लोअर का रीजन, है ना। बिकॉज दोनों को जब हम खोलेंगे, इस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, इट इम्प्लाइज और दिस इज x इज लेस देन -1, एंड जब हम मॉड ऑफ y ऑफ ग्रेटर देन 2 ओपन करेंगे, दिस इज y लेस देन -2, है ना। तो ये हमारे पास रीजन आ रहा है ना, यहाँ पे तो है जो हमने स्टैंडर्ड रीजन यहाँ पर
देख बनाया है वही हमारे पास सेट है। ओके, सेट करेंगे। तो आइए जरा लिखते हैं आंसर सोल्यूशन। तो पहला इंटीरियर लिखते हैं। इंटीरियर वी कैन से कि सारे सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे सेट के। दिस इज mod of x is greater than 1 and mod of y, बिकॉज बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर। तो दिस इज ए अगेन, तो पूरा सारे के सारे सेट के मेंबर विल बी द। तो इसमें बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाएगी। दिस इज और mod of x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड mod of y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास है, this is A closure. A closure will be equal to A dash, because you know that this is the union of A dash. A dash is the superset for A. Isolated points की बात करें तो here we can just say this is infinity. So since A interior is just equal to A, this implies it is open set, है ना? Open set है, but A dash is not subset of A. This implies not closed. Not closed है, not bounded है, bounded भी नहीं है, not bounded implies not compact. When A closure is not equal to R2, this implies not dense. It is not dense. Okay. Not path connected clearly. Let's say not clearly. We can say not path connected. Connected. Sorry, not connected. Sorry, is not connected. Not connected, है ना? And not convex. Not convex since this is eta is a not equals to A, this implies not perfect. आइसो की अगर हम बात करें which is not equals to A, this implies not discrete. This not discrete. Okay. So we have done with the 51 problem. Okay. So नेक्स्ट जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि लाइट जा चुकी है तो लैपटॉप कभी भी बंद हो सकता है। इसलिए हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना? अभी जब लाइट आएगी तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसे रिकॉर्ड कर देंगे। ओके। तो आई होप कि आपको जो सॉल्यूशंस हैं, कैसे हम लोग लिख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सारे पॉइंट्स को, आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली, और आप कर पा रहे होंगे। बेसिकली थोड़ा सा हम आंसर्स को फास्ट लिख रहे हैं। अब जितना हमने समझाना था बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, तो अब इवन दो हम हर एक क्वेश्चन के अंदर चीजों को फिर से बोल देते हैं कि क्या होता है डिफिनीचर। तो होप तो कि ये बेनिफिट्स हो रहे हैं कि हम अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं। तो यहाँ पर बस हम मेरा काम इतना है कि आंसर क्या होगा आप अपने से चीजों को करिए, है ना? आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर अपना आंसर सारे लिखिए, फिर हमने जो आंसर लिखे उनसे मिलाइए कि वो आंसर हमारे करेक्ट हैं कि नहीं, है ना? हम चीजों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या पूछा गया और कैसे हमें आंसर करना है, क्या आंसर्स होंगे। ओके। So thank you so much. Keep learning from here.